कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आकर। प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार? These 16 seconds just summarize Bollywood's 60 years of horror. वैसे देखे तो हमने बहुत सारे ड्रामास बनाए हैं, इतनी सारी कॉमेडीज बनाई हैं, and romantic movies have been like second skin to Bollywood. पर हॉरर में अभी भी पोटेंशियल खुरेदना बाकी है. We had a very seesaw relationship with horror. बट हाँ, सिर्फ सरफेस स्क्रैच करने में ही we've seen some epic trippy movies. सबसे पहली हॉरर मूवी कॉल्ड महल रिलीज हुई थी इंडिपेंडेंस के जस्ट 2 साल बाद. This was the rise to fame for legends like मधुबाला. In the 60s we had movies like 20 साल बाद, गुमनाम एंड भूत बंगला, जिससे हॉरर जॉनर की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगी. अ मेजर रीजन फॉर दिस वाज द म्यूजिक. दिस वाज द टाइम जब लता मंगेशकर जैसी प्यारी आवाज ने भी लोगों को शिवर्स दे दिए थे. एंड ऐसा नहीं है कि द म्यूजिक वाज अनकंफर्टेबल. उनकी मेलोडी बहुत प्लीजिंग होती थी, बट दे मैनेज्ड टू इंटीग्रेट स्पूकी लिरिक्स लाइक भाई, मतलब ये सुन के मुझे अभी भी अनसेटलिंग लगता है. 70 शुरू होते ही एक माइलस्टोन एज आया ऑफ द रामजे ब्रदर्स, द फाउंडर्स ऑफ इंडियन हॉरर. इन 7 भाइयों ने हॉरर को लिटरली रीडिफाइन कर दिया था. दे गिव मैसिव हिट्स लाइक 2 गज जमीन के नीचे, वीराना एंड पुरानी हवेली. वी वर इन अ टाइम जब हम ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स, मम्मीज, चुड़ैल्स और प्रेत आत्मा के बीच में डिफरेंस फिगर आउट कर रहे थे. एंड ऑन द अदर हैंड रामजे ब्रदर्स ने अपने ही कैटेगरी के प्राणी बना दिए थे. बट इट सीम टू वर्क जस्ट फाइन बिकॉज क्लियरली हम आज भी उनके बारे में बात कर रहे हैं. वीराना वाज सच अ माइलस्टोन मूवी दैट Amazon Prime added this to their collection. उस टाइम पे these movies were looked down upon, पर आज रामजे ब्रदर्स की मूवी कल्ट बन चुकी है. They are known for their abandoned हवेलीज, द हॉन्टेड मंदिर्स, स्पूकी ग्रेवयार्ड्स एंड क्लासिक काला जादू. मैंने जब अपनी मॉम से पूछा कि उनके टाइम की सबसे आइकॉनिक हॉरर मूवी कौन सी थी, उन्होंने कहा जानी दुश्मन. नहीं, दिस इज नॉट द टर्मिनेटर वाली रिप ऑफ, दिस इज द 1979 वाली जानी दुश्मन. और इसका क्या किलर प्लॉट था, लिटरली किलर. अ हॉनी घोस्ट किल्स ऑल द ब्राइड्स ऑफ अ विलेज एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट हॉरर मूवीज दैट हैड अ ग्रेट एंसेम्बल कास्ट. सरप्राइजिंगली 90s में हमने ज्यादा हॉरर मूवीज नहीं बनाई एक्सेप्ट मे बी पापी गुडिया. दिस इज नॉट मेमोरेबल बिकॉज इट वाज ग्रेट. इनफैक्ट ये मूवी काफी ज्यादा फ्लॉप हुई थी, बट ड्यू टू इट्स क्रिंजीनेस ये एक माइलस्टोन मूवी बन गई. It was a rip-off of the English movie Child's Play, जिसमें the villain was a doll called Chucky. Cut to the 2000s and horror started taking a different approach. This is when I was growing up and so was Bollywood. I still remember the story of a guy who watched Darna Mana Hai alone in a hall late at night as a challenge. By the time the movie ended, he had died. I still don't know if this is true or not, but the thought of that movie still haunts me. We also had Vaastu Shastra during that time, which was produced by Ram Gopal Verma. उस टाइम पे कहते थे कि this is the scariest movie ever made in India. Then Ekta Kapoor produced Krishna cottage and it was probably the mark where horror movies started turning into B-grade flicks. This is when things started getting scary. Not the डरावने वाला scary, but the scary की where is this genre headed? With the Raz series made by Vikram Bhatt and with movies like Ragini MMS, it just felt like an excuse to integrate soft porn into movies. If not that, then we were making movies like 1920 and outrageously copying Hollywood with all the exorcisms and jump scares and whatnot. But the fact still remains that these movies were super hit and hence all of them turned into franchises. They were the milestone horror movies for 14-year-old kids who used to sneakily go and type Raz hot scene on YouTube. Thankfully for everyone, cinema started evolving and we started taking better stories even for horror. 13B is one of the most underrated psychological horror movies I've watched. जब ये रिलीज हुई थी, it was so fresh कि you couldn't predict a single plot twist. इसकी IMDb rating अभी तक 7.3 है. एक थी Diane was another milestone movie which completely upped the game of horror. This was not a surprise because this nuanced movie was co-written by Vishal Bhardwaj. Slowly, we started making movies inspired from true events. We started giving twists to very real things जो असल में monsters से ज़्यादा scary होती हैं because they feel possible. With movies like Pari and Tumbad, we also started integrating mythology into our horror movies and that proved to work wonders. With Stree and Bhool Bhulaiyaa, we're also seeing a shift to horror comedies, thereby integrating 2 completely opposite genres and making them even more watchable. All in all, we're still far away from owning this space and exploring its full potential. But the way things are going, I'm not scared for it anymore. I'm looking forward to all the mind-blowing horror movies that are to come और जिनको देख के फिर से पेरेंट्स के रूम में सोने की जरूरत पड़ जाए. Tell me your favorite horror movies in the comments below and for more such videos, subscribe to Indiatimes.